आके मन के राहे सावन वसिया कुलता के राहे समय समय सिरिया के मन के राहे दिया में हार कहरो कल जोल बहरो जम जी दे सतारे आसी आए हम तेरे दरबारे सतगुरु सावन शाह अमृत बरसया गुरु प्यारे आसी आए हम तेरे दरबारे असी झुकिया हाथ करने के रे पक्षो सतगुरु जी तेरे असी झुकिया हाथ करने के रे पक्षो सतगुरु जी तेरे असे मेल बहरे उजल कौन कहरे तेरे बिना प्यारे आसी आए हम तेरे दरबारे सतगुरु सावन शाह अमृत बरसया गुरु प्यारे आसी आए हम तेरे दरबारे सचिया सावन सुन परियादा दास अचाद करे तेरे याद सचिया सावन सुन परियादा दास अचाद करे तेरे याद सत्संग सोए पारश नाम दियोए तेरे सहारे आसी आए हम तेरे दरबारे सतगुरु सावन शाह अमृत बरसया गुरु प्यारे आसी आए हम तेरे दरबारे अमृत नाम पर्व चलिया सानु भूलिया रस ते पाया अमृत नाम पर्व चलिया सानु भूलिया रस ते पाया असी जीव बूरे बुझत पेट तूरे ओ गुण हारे आसी आए हम तेरे दरबारे सतगुरु सावन शाह अमृत बरसया गुरु प्यारे आसी आए हम तेरे दरबारे हित खबल सिंह दे प्यारे माता जीवनी दे राजा दुलारे हित खबल सिंह दे प्यारे मत जीवनी दे राजा दुलारे पंब बक रहे सी जीव मक रहे सी आके तारे आसी आए हम तेरे दरबारे सतगुरु सावन शाह अमृत बरसया गुरु प्यारे आसी आए हम तेरे दरबारे करे दास अचाय बपुकारा सावन कीर पल कदेना पिसारा करे दास अचाय बपुकारा सावन कीर पल कदेना पिसारा मेनू मात दा तेरे पेके राख ले मारे अजाब दास पुकारे आसी आए हम तेरे दरबारे सतगुरु सावन शाह
अमृत सरया गुरु प्यारे आसी आए हाँ तेरे द्वारे। थैंक यू। चलो गुरु भक्ति अति कठिन जो खाने की दार। गुरु भक्ति अति कठिन जो खाने की दार। बिना साच पोसे नहीं मां कठिन व्यवहार। परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। ये कल की वाणी आगे ले। This is the Bani of Param Sant Sadguru Kabir Sahib. This is the Bani that we started off with yesterday. We'll be continuing with the same Bani today. तो वही आप इशारा देते हैं, गुरु भक्ति अति कठिन है ज्यों खाड़े की धार। कहते हैं कि गुरु भक्ति कठिन जरूर है। क्यों? तो आप ही कहते हैं बिना साज पहुंचे नहीं महा कठिन व्यवहार। गुरु भक्ति कैसा है? तलवार के धार के ऊपर चलने जैसा है। जो निश्चय होके जाता है वो पार उतर जाता है, और जो डावाडोल होता है वो कटमरे। कहते हैं वो न दुनिया के न दीन के, वो किसी तरफ के नहीं होते। So Kabir Sahib in the Bani says that the devotion of Sadguru is very difficult. It is, he compares it with walking on the blade of a sword. So he says that it is very difficult, like walking on the blade of a sword. If you walk carefully, then you will pass it. But otherwise, if you go all over in terms of being stretched toward the worldly desires and towards God Almighty, then you will fall on that blade and you will get cut. क्यों? गुरु का हुक्म पालन करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और जब तक हम गुरु का हुक्म के ऊपर अपना जीवन आधार नहीं बनाते, हम गुरु भक्ति में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो लेकिन कबीर साहब यहाँ क्या कहते हैं? क्यों कठिन है? बिना साज पहुंचे नहीं महा कठिन व्यवहार, कि बगैर सत्य के हम गुरु भक्ति में गुरु की कृपा हासिल नहीं कर सकते। So, listening to the teachings of the master and following on what the master has explained to us and following the instructions of the master is indeed very difficult. So that is why devotion is difficult, because we have to follow the instructions of the master. But here Kabir Sahib says that it is difficult. The devotion of the master is difficult because you will be able to only tread on that fine blade of the sword if you have truth on your side. सच बोलना, सच व्यवहार करना, सच का अनुसरण करना, सच को अपना जीवन आधार बनाना। क्यों? ओ मालिक सच है, उसका नाम सतपुरुष है, और वहां से जो नाम आया है उसका नाम सतनाम है, और जो उस नाम से जुड़े हैं उन्हें सदगुरु कहते हैं। और वो नामदान के दिन हमारी आत्मा को भी शब्द से कनेक्शन करते हैं गुरु, इसीलिए हम सत्संगी बनते हैं, सत्य के संगी। तो हमें चाहिए कि अब हमारा आचार विचार व्यवहार ये सच होवे। So he says that you have to tread on this path of truth.
you have to be true in your thoughts, you have to be true when you speak to others, and you have to be true in your dealings with others, because on it the whole essence of Santmat is truth. God Almighty, He is called Satpurush, which means again truth. He is the true person. So that is सत्संग Satpurush, and the sound current which comes from there and connects us is also Satnam. Is and सत्संग the masters who come from there to take us back to Him, they are also called Satguru, because they are also connected to the truth. And at the time of initiation, when they connect the soul, they once the soul is connected to the Nam, they are also called Satsangis. So Sat means truth. तो कहते हैं कि ये इसीलिए कठिन होता है कि हम सच का पालन नहीं कर सकते, सहज सहज में झूठ बोल देते हैं और छल कपट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, जो कि सत्संगी का मतलब एक साधु, जो कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, मन के दायरे में चलते हैं, और इसीलिए हमें गुरु भक्ति में सफलता नहीं मिलती। So we find it difficult to tread on that path of truth. Our dealings are not true. We work in our own selfish interest, and therefore we deceive others. We do not talk the truth always. We lie. So we are not following that path of truth. And this Santmat is a path of truth. That is why if we are not being able to walk that path of truth in our thoughts, behavior, and in our talk, we will not be able to get success on this path of Santmat. क्योंकि हमारे मन को आदत है, करोड़ों जन्मों से मन पे कर्मों की मैल चढ़ी है और सच का पालन करना बड़ा कठिन है। हम करने को जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है। अगर हम एक काम करें, गुरु का हुक्म माने, सुमरन के पीछे पड़ जाए, सुमरन सुमरन सुमरन, तो सुमरन से जो हमारे पाप कटेंगे, मन निर्मल होएगा, तो हमारे अंदर सुमरन से ही वो गुण पैदा होगा कि हम सत्य के रास्ते पे चलने लगे। जब मन साफ होगा तो चलेंगे, और वो सुमरन ही हमारे अंदर वो भक्ति करने की ताकत देगी, सुमरन ही हमें आगे बढ़ाएगी। तो सबका काम एक सुमरन, संत मत की पहली सीढ़ी सुमरन है। अगर आपको अंदर जाने के लिए कहते हैं आपको सुमरन के पीछे पड़ना पड़ेगा, पहले अपने मन की सफाई करनी पड़ेगी। जब आपका मन साफ होगा तो ऑटोमेटिक ऐसे गुण आपके अंदर प्रकट होंगे और सुमरन के जरिए, और फिर आप ऑटोमेटिक उस रास्ते पे चलने लगेंगे। गुरु की दया का हाथ आपके सिर पे आ जाएगा। The mind is burdened with millions of deeds of millions of our previous lives, and it is not it is impure today, and therefore when we try to tread this path of truth, it becomes difficult for us because of the impurity that the mind is carrying, and we keep falling again and again and failing in our duty to maintain that truth. So the masters, they give us instructions, and what all the masters have always emphasized is to do Simran, because just by doing Simran, the Simran itself will work towards cleansing the mind, and once the mind becomes pure and it becomes clean, automatically it will start treading on this path, it will start doing that devotion which is required, it will start developing that love and affection. So all that we have to do is follow the instructions of the master in doing Simran. So Simran is the first step on this path of devotion, and if we do it unfailingly, we keep doing Simran all the time throughout the day and while we are meditating, then we will be able to help in the process of the cleansing of the mind, and that will then help us do the correct devotion. सुमरन जब तक आपका नहीं पकेगा, पहले हम जबान से सुमरन करते हैं,
सुमरन करते करते मन से सुमरन चालू हो जाना, जिसको अजपा कहते हैं। जब मन से सुमरन हो चालू हो जाएगा तो आप किसी से बात भी करते रहेंगे तो मन सुमरन से जुड़ा रहेगा, वो सुमरन एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ेगा, उसको अजपा कहते हैं। और जब अजपा हो गया तो आपका काम बन गया। जब मन सुमरन के रंग में रंग जाए और मन से सुमरन चलने लगे तो समझो आपको कामयाबी मिल गई, तो आपका रूहानी सफर स्टार्ट हो जाता है। So initially when we do Simran, we do it with the tongue, and with the help of the tongue we keep doing the repetition of the 5 holy names. As we gain practice of that, our Simran becomes automatic in the mind, and that is called Ajapa. And there the mind starts doing the Simran. So even when we are talking or conversing with somebody, the mind is continuously doing Simran. And once we are in that state where the mind is doing the Simran, then we can assume that we have got success on the path and that our journey has begun, and that we will be leaving the 9 doors and coming to the 10th door. तो इसीलिए कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि इसीलिए गुरु भक्ति कठिन है कि हम सत्य का पालन नहीं कर पाते। So therefore Kabir Sahib says that the devotion of God Almighty, of Sadguru, is difficult because we are not able to follow on the path of truth. भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम। भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम। शीश उतारे हाथ से, सोले शीश सतनाम। फिर आप कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु भक्ति करना नहीं कायर का काम। जो डरपोक होते हैं, जिनका मन डावाडोल रहता है, ऐसे लोग कभी गुरु भक्ति में सफल नहीं हो पाते। गुरु भक्ति में सफलता उन्हीं को होती है जो दृढ़ संकल्प होते हैं और गुरु से अपार प्रेम, प्यार और भाव, भक्ति लेके इस रास्ते पे आते हैं और उन्हीं को सफलता मिलती है। Now Kabir Sahib says that devotion of the Sadguru is not for the cowards, it is for those people who are brave. And by cowards he means people who are undecided, who want to follow on the path of the world and also follow on the devotion of the masters. Instead he says that it is for those brave people who have a strong resolve, and following that strong resolve they have taken the plunge of devotion and have that faith and love and affection for the master. कहते हैं भाई मंज की कहानी बड़ी रोमांच है, संघर्ष भरा है। जो उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में किया, शायद कोई सिख ना किया होगा। The story of Bhai Manj comes out strikingly, and it is a very interesting story, and it is an interesting. It is interesting to understand how he has done his devotion of his master. वो उनको अर्जुन देव जी का सत्संग मिला। जब उन्होंने 3-4 दिन सत्संग सुना तो वो संस्कारी आत्मा थी, उनमें बड़ा परिवर्तन आया और वो गुरुदेव के चरणों में जाके नामदान का प्रार्थना किया। When Bhai Manj went to listen to the satsangs of Guru Arjan Dev Ji, for 3 or 4 days he listened to the satsangs, and that those satsangs had a lot of impression on his mind, and he decided to get initiated. So he requested for initiation. तो गुरु अर्जुन देव ने देखा कि ये संस्कारी आत्मा है, और पहले जमानों में क्या था कि संत ऐसे ही मांगते ही नामदान नहीं देते थे, परीक्षाएं लेते थे। जब सिख परीक्षा में पास होता तो उसी को नामदान देते थे। बहुत गिने गिने लोगों को नाम मिलता था।
So when he requested initiation, Guru Arjan Dev Ji saw that he in those days the masters would not just give initiation to anybody who would come and request for initiation. They would carefully consider that disciple and look at how he had to be cleansed first, and after the disciple was strongly on the path of devotion, they would give the initiation. तो अर्जुन देव ने इनकी परीक्षा चालू किया। इन्हीं के ये जमींदार थे, सैकड़ों एकड़ के मालिक थे। और अर्जुन देव ने देखा और इन्हीं के जमीन में शेख सरवर की समाधि है और सारा गांव उसी शेख सरवर के समाधि की पूजा करता है। So the masters in those days would test their disciples. So when Bhai Manj requested for initiation, Guru Arjan Dev Ji saw that he was a very wealthy farmer. He had hundreds of acres of land, and also that on one parcel of his land there was this tomb of Sheikh Sarovar. शेख सरवर Sheikh फकीर Sarwar. था। तो बाद में वो आप तोड़ के और वो समाधि को वहां से हटा के फेंक के और लेवल करके आओ, तब आपको नामदान मिलेगा। So he told Bhai Manj that first you break that tomb of Sheikh Sarwar and level that land, and once you have done that, you come to me and I will give you initiation. काम बहुत कठिन था, लेकिन इन्हें नामदान का एकदम मन में विरह और प्रेम पैदा हो गया था। तो उन्होंने शाम को 10-12 नौकरों को बुलाया, क्योंकि आप जमींदार थे, आपका बात लोग मानते थे। तो 13-14 नौकर फावड़ा और सामान लेके, गड़ारी लेके आए, तो उनको उधर ही सुलाया और रात को 12 बजे जाके समाधि तोड़ दिया और उसको लेवल करके इधर उधर फेंकवा दिया और उसको लेवल करा दिया। So Bhai Manj thought that this work was indeed difficult, but he was a soul of past impressions, and he was very impressed by the satsang. So he decided that he will indeed do that. So he called about 10 to 12 farm hands, and he was a very wealthy farmer. So all of these people came with the instruments to break that tomb. He asked them to stay the night, and then at around 12 in midnight, he took them and he got the tomb broken and leveled out. और सवेरे अर्जुन देव की सेवा में हाजिर हुए, कहते हैं महाराज आपने जो कहा मैं करके आया। So in the morning he went to Arjun Dev Ji and told him that as you had instructed, I broke the tomb and I leveled the land there. तो बाद में अर्जुन देव ने अंतर ध्यान होकर देखा कर दिया है, तो उसको बिठा के कमरे में नामदान दे दिया। अब नामदान देने के बाद में भी परीक्षा बंद नहीं किया। So then Guru Arjan Dev Ji saw within that yes, indeed he had done the work, and he took Bhai Manj in a room and gave him initiation. But even though he had given the initiation, the test had not stopped. So he continued to test Bhai Manj. तो कहते हैं कि घर के लोग कभी बीमार हो जाते, कभी कोई जानवर बीमार होके मर जाता, कभी कहीं घोड़े मर जाते, कभी कोई बैल और गाय मर जाती थी। कोई रोज रोज कुछ न कुछ जो मुसीबतें आने लगी। So after he was initiated, he started facing difficulties. So some family member would fall sick, or some of his cattle would die, and some cows would die. So that way he started facing one by one these difficulties. लेकिन इन्होंने अपने दिल पे उसका असर नहीं लिया। आप
दृढ़ संकल्प होके गुरु के हुक्म पे चलते थे और गुरु का प्रेम प्यार अपने अंदर बनाए रखा। But Bhai Manch did not get swayed by all of this, and he stood strong in his resolve and his devotion towards his master. कभी कभी घर के लोग साथ छोड़ जाते, एक एक करके नुकसान होने लगा, तो गांव वाले लोग आके कहने लगे, देखो आपने जो फकीर की समाधि तोड़ी है, देव की समाधि तोड़ी है, इसीलिए आपको ये तकलीफें आ रही हैं, आप माफी मांग लो और समाधि फिर से बना दो, ये सब ठीक हो जाएगा। So that way, more and more difficulties befell him, and his family members also started leaving him, and the villagers also they tried to discourage him on this path, and they also told him that all these difficulties that you are facing because you have broken that tomb of a fakir, and you should actually reinstate that tomb and beg for forgiveness, and perhaps all these things will change for you. लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, और फिर क्या हुआ, गांव वालों ने मीटिंग किया कि ये पापी हैं, इनके ऊपर प्रायश्चित है, कोई भी इनके काम के लिए जाना नहीं चाहिए, जाएगा उसको भी प्रायश्चित पाप लगेगा। तो कहते इस तरह से सब उनके पास काम के लिए जाना बंद हो गया, अब खेती गृहस्थी भी ठप हो गई, जानवरों का देख रेख करने वाले भी कोई नहीं, तो बड़ा नुकसान होने लगा। So these farmers also decided to boycott him, and they also all the villagers decided to boycott him, and they decided that none of them will go and work on his farms, and no one will take care of his cattle. So like that, his farmland did not yield crop, and there was no one to look after his cattle also. So he started incurring a lot of losses. तो बाद में करें क्या, फसल होती नहीं थी, कोई काम पे आता नहीं, फिर जमीन बेच बेच के जो है घर चलाना पड़ा, कुछ बच्चे जवान थे उनकी शादी करनी पड़ी, फिर धीरे धीरे घर के लोग भी साथ छोड़ गए, अब तीन ही तीन बचे थे। ऐसा 3 साल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो गया। So that way he started getting losses because there was no yield in his farms, and he then started selling his lands piece by piece to for running his living, and his children were to be married, so he did all of that by selling his land parcels, and over a period of time that land also substantially reduced, and he continued to make losses. His family members also left him. जब कुछ खाने पीने की तंगी आने लगी, कोई जमीन भी लेना छोड़ दिया क्योंकि प्रायश्चित है, तब उन्होंने सोचा अब यहाँ रह के हम जी नहीं सकेंगे, तो उन्होंने बोला चलो जहाँ पे पानी का कालवा नहर होता है वहां जाएंगे जहाँ हमें कोई पहचाने नहीं, और जाके मजदूरी करके अपना पालन कर लेंगे। So people also boycotted, and they also decided not to buy his lands also. So he was not able to liquidate his land parcels, and he then decided that he and his wife would go and go at a little distance, go away from that village where people would not recognize him, and they would stay somewhere by the riverside, and then he would work as a laborer and earn his money. घर में खाली 3 ही बच्चे थे, पति पत्नी और एक लड़की 12 साल की, और तीनों बोला चलो गट्ठर बांधो और चलेंगे, तो 2 गट्ठर बांधा और दोनों पति पत्नी उठा के बच्चे को लेके चले, काफी दूर जाके जहां नहरें बहती थी और जहां इनको कोई पहचान नहीं सकता था, ऐसे जगह जाके झोपड़ी बना के
और मजदूरी करके अपना जीवन बिताने लगे। So there were only 3 members left in his family: himself, his wife, and his 12-year-old daughter. So the three of them decided that they will leave this village, and they packed whatever little utensils were left, and into packets. They carried all those things and went at a distance. So they went far away, and where there were canals or rivers, they made a hut there, and he started staying there, the three of them. तो बाद में वहां रहते रहते 6 महीने हो गए। तो भाई जो गुरु परीक्षा लेता है वो उससे वाकिफ है उसकी हालत क्या है। तो बाद में अर्जुन देव ने एक लेटर लिखा और अपने शिष्य के हाथ में भेजा कि जाओ भाई मंज को देना, लेकिन इसकी कीमत 20 रुपए लेके देना। So 6 months passed like that. Now the master who is testing the disciple, he is also aware, and he is also tracking his disciple. And he sent a letter. Guru Arjan Dev Ji sent a letter to Bhai Manj, and he told the disciple who was handing over that letter to Bhai Manj that you hand this over to him and collect a fee of 20 rupees before you hand over the letter. तो बाद में वो सेवादार, महाराज का सेवादार लेटर लेके आया और भाई मंज के कुटिया के सामने खड़ा होकर कहता है महाराज ने आपको लेटर भेजा है। हाँ, तो बोले लाओ। कहते नहीं, इसकी कीमत 20 रुपए है। महाराज ने कहा है पैसा लेके ही लेटर देना। तो बड़े सोच में पड़ गए कि महाराज ने भेजा है, लेना जरूरी है, लेकिन करे क्या। So that Sevadar took the letter and he went to Bhai Manj, and he stood outside his hut and asked Bhai Manj to come out. And when Bhai Manj came out, he said that the master has sent a letter, uh, uh, but he cannot hand over. He has been instructed by the master to first collect 20 rupees and only then hand over the letter. So now Bhai Manj was started thinking as to how he would do that, because he had to take the letter. It was his master who had written the letter to him, so he had to collect the letter, and he had to also pay that 20 rupees. तो बाद में झोपड़ी में गए, अपनी औरत से पूछते हैं कि क्या कुछ है, पैसा या तो सोना चांदी कुछ लेके रखी है। तो बोला जो हमारे शरीर पे था वो मैं गट्ठर में कपड़े में बांध के लाई थी और उसके अलावा कुछ नहीं। तो बोला अच्छा वो मुझे दे दे। तो वो सोने का जो गट्ठर था उन्होंने उठा के मंज के हाथ में दे दिया और मंज लेके गए गांव के सोनार के पास बेचा, तो उन्होंने 20 रुपया ही दिया और वो 20 रुपये ला के सेवादार को दे के लेटर लिया और लेटर लेके उसको अपने माथे से अपने छाती से लगाते हैं कि गुरुदेव ने मुझे याद किया। So Bhai Manj went inside the hut and requested his wife and asked her if she had something valuable to offer, so that he could fetch 20 rupees and collect that letter. So she said that whatever ornaments she was wearing, she had only carried those, and she had tied them up in a piece of cloth and kept them. So she offered her ornaments to him, and he took those ornaments, went to the goldsmith in that village, and he offered those ornaments, and he got exactly 20 rupees in exchange. So he came back and offered that 20 rupees to that Sevadar and collected that letter of his master. So once he collected the master, he was very happy, and he touched the letter to his forehead and to his chest, and he was very pleased that his master had remembered him. और लेटर खोल के पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है कि हम अच्छी तरह से हैं, हम आशा करते हैं कि आप भी कुशल से होंगे।
So when he opened the letter, and what was written inside is that his master had written that I am fine here, and I hope that you are also fine. तो लेके उनको बड़ी खुशी हुई, चलो महाराज ने मुझे याद तो किया, और उसको बड़े प्रेम से अपने जो है कपड़े के गट्ठर में संभाल के रख दिया। इस तरह से फिर 6 महीने बीते, फिर गुरुदेव ने दूसरा लेटर भेजा। So he was very happy that indeed his master had at least remembered him and sent that letter to him. So he was very pleased, and he carefully kept that letter and wrapped it up in cloth and kept it. So that way another 6 months passed. तो बाद में लेटर भेजा, इसकी भी कीमत 20 रुपए दे के ही लेना, पहले ऑर्डर दे के भेज दिया। तो वो भी ऐसे ही सेवादार आया कि महाराज ने आपको लेटर भेजा है, कहते हैं लाओ, कहते नहीं इसकी भी कीमत 20 रुपए लेके ही देना कहा है। So his master wrote another letter to him after 6 months, and he told the sevadar that you should collect 20 rupees before you hand over this letter also. So like that sevadar came and told Manj that he should give him 20 rupees so that he could then hand over the master's letter to him. तो बाद में देव सोचते हैं अब क्या करें, फिर औरत के पास जाके पूछते और कुछ है तो वो कहती महाराज मैं जो भी कुछ छुपा के रखी थी, मेरे शरीर के ऊपर का सोना था, मैंने सब दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। So he went inside again and requested his wife if she had anything of value. And this time she said that no, last time I gave you whatever I had kept, it was my ornaments, and I had hidden them safely and I gave all of them to you last time. So I don't have anything. तो बाद में विचार करते हैं क्या करें, तो देखा लड़की है 13 साल की तो जो जहाँ रहते थे वहाँ का जो जमींदार था, वो पहले जमाने माने कि जब ये अच्छे थे तो इनकी बड़ी लड़की का संबंध मांगा था, तो उस समय इन्होंने माना नहीं। तो इनको ख्याल आया कि चलो वो लड़की नहीं तो ये लड़की सही, वो जमींदार को दे देंगे, वो हमें 20 रुपया दे देगा। So then he started thinking what he could do to get that 20 rupees. So he saw that he had his daughter of 13 years, and he remembered that in his earlier village, one of the landlords had asked for his elder daughter's hand in marriage for his son. So at that time Bhai Manj had refused it, but he felt that maybe he will take his younger daughter. So if not the elder daughter, he will offer the younger daughter in marriage, and perhaps he will get his 20 rupees. He will ask that landlord to give him 20 rupees for that. तो लड़की को लेके जमींदार के पास गए और कहा कि महाराज मेरे से गलती हो गई, आपने हमारे लड़की का संबंध मांगा था, लेकिन मैंने उस समय आपका तिरस्कार किया, माना नहीं, तो वो लड़की नहीं तो ये लड़की सही, ये आप इसको अपने घर पे रख लें और अपने छोटे लड़के से इसकी शादी कर लें, और मुझे 20 रुपए की जरूरत है। So he then took his daughter and he went to that village and that landlord. And when he met that landlord with folded hands, he told him that he was indeed remorseful that he had not accepted the offer made by the landlord for his elder daughter when he had asked him for marriage with his son. So he said, in my arrogance, I had not accepted your offer, but I humbly request you if you can accept my younger daughter instead, and she can marry your son. But I am in need of 20 rupees. So if you can give me that with the acceptance of the offer. तो उस जमींदार ने सोचा इसकी हालत तो बड़ी बुरी है,
और इसके साथ ये लड़की भी दर दर भटकेगी, तो अच्छा है कि इसको क्यों ना अपने घर पे रख ले, भी इसकी शादी कर देंगे। तो उसको दया आई तो बोला अच्छा ठीक है, तो लड़की को रख लिया और इनके हाथ में 20 रुपए दे के भेज दिया। So that landlord felt sympathetic towards Bhai and he was also sympathetic towards his daughter. He felt that she will have to go from place to place with him and he has no money, so she will also suffer. So why not accept that offer? And she will remain happy in our house. So he accepted the offer and he said that okay, we will have her married to my son. And then he also gave him that 20 rupees. और वो 20 रुपए लेके और अपना सेवादार को दिया, सेवादार ने वो लेटर दिया और वो 20 रुपया लेके चला गया। तो वो लेटर को अपने माथे लगाते हैं और बड़ा भावुक होकर के उसको खुला करते हैं। तो उसमें क्या लिखा था कि जिस भी हालत में तुम हो उसी हालत में आश्रम में आ जाओ। So he took that 20 rupees and went back and offered that to that Sevadar. And then the Sevadar handed him that letter of his master. So he was very sentimental and he touched that letter to his forehead and chest and he opened that letter. So when he read the letter, his master had written that in whatever state you are, you come to the ashram. तो बाद में औरत से कहते हैं कि देखो गट्ठर बांधो। तो औरत ने एक बर्तन का गट्ठर और एक कपड़े का गट्ठर बांधा और दोनों एक एक गट्ठर लेके वहां से चल के और कुछ दिन में आश्रम पहुंचे। So immediately he went inside and told his wife that we should pack and go to the ashram. So they made two packs of their utensils and clothes and carried them and they walked towards the ashram and in a few days they reached the ashram. जब वहां गए शाम को दर्शन के समय लाइन में खड़े थे और जाके जब सामने गए, महाराज ने प्रसाद तो दिया लेकिन इनकी तरफ देखा नहीं। वो दूसरे तरफ देखते हुए बात करते रहे और इनको खाली हाथ में प्रसाद दे दिया और ये अपना प्रसाद लेके नीचे उतर गए। So when they went to the ashram, they went for darshan of the master, and when Bhai Manch went for his personal darshan, Guru Arjan Dev Ji was talking to somebody, so he was looking away from Bhai Manch, and he just gave him the prasad and did not look at him. और दोनों दर्शन करके आए। फिर वो आश्रम में साफ सफाई करते थे, बर्तन और तन लंगर में मदद करते थे और आप खेती के काम में जो भी आश्रम का सेवा था उसमें लग गए। ऐसे धीरे धीरे एक हफ्ता चला। So that way they both got darshan, but the master did not look at them and just gave them the prasad. And they stayed in the ashram and they started doing seva. So Bhai Manj would do whatever seva in the farm and his wife would clean utensils. So both of them did seva. So that way a week passed. तो बाद में एक हफ्ता होने के बाद में औरत खड़ी थी बाहर लाइन में, तो महाराज किसी से पूछ रहे हैं क्यों भाई मंज भी आया है क्या? एक हफ्ता से जा रहे हैं दर्शन को, उस तरफ जानबूझ के नहीं देखते लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई अभाव नहीं आया। और बाद में वो पूछते हैं क्यों भाई मंज आया है? औरत सुन रही बाहर खड़ी है लाइन में, तो बोलते हैं हाँ आया है महाराज, एक हफ्ता हो गया। क्या करता है? लंगर में खाना खाता है और आश्रम में सेवा करता है। तो महाराज कहते हैं कि किया और खाया बराबर हो गया, बचा क्या? So that way a week passed, and once it so happened that while his wife was standing, the master came and he started conversing with somebody else.
with his back towards her, and he asked that person as to whether Bhai Manj was to come to the ashram. Has he come? So now every day they are taking darshan from the master. They are going there every day and taking prasad. Every day he was ignoring and not looking at them and giving them the prasad. So despite that, he asked the other sevadar as to whether he had seen Bhai Manj and whether Bhai Manj had come to the ashram. So that sevadar told the master, yes, of course he has come. He's here for a week now, and then the master asked him, what is he doing? What does he do here in the ashram? So he was told that he does seva in the ashram, and then he eats in the langar. So the master said, okay, so he's doing seva and he's eating. So what is left? There is nothing left with him. तो बाद में वो औरत जा करके भाई मंज को कहा कि महाराज ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मंज ने विचार किया, बात सच है कि हम लोग किया और खाया, तो बचा क्या? तो ऐसा काम करो, तुम भी लंगर में खाना नहीं खाना और लंगर का बर्तन पूरा साफ करना, और मैं सवेरे कुल्हाड़ी लेके बाहर जाऊंगा जंगल में और 2 बंडल लकड़ी काटूंगा। तो एक बंडल ला के पहले आश्रम की सेवा में दूंगा 9-10 बजे के अंदर, और एक बंडल ले जाके मैं दुकान में बेचूंगा मिठाई का, और वहां से पूरी भाजी लेके आएंगे तो दोनों वही खाएंगे। तो तुम्हारा बर्तन का पूरी सेवा होएगा, हमारा एक बंडल लकड़ी की सेवा हो जाएगी। So that way the master said this purposely so that she would be listening. So Bhai Manj's wife then conveyed this conversation that she had overheard, and she told Bhai Manj that, see, the master is saying this, that we are eating in the ashram and we are doing seva, and there is nothing left. We are using up whatever seva we are doing by eating food here for free. So Bhai Man said that, okay, from tomorrow we'll not do this. You do not eat in the ashram. I will also not eat in the langar. And I will go early morning and fetch firewood. I'll make 2 bundles. I will give 1 bundle in the ashram as seva, and I will take the other bundle to the nearby village and get food in exchange. And then both of us will eat that food, and you do your seva of cleaning utensils. That way you will be able to do your seva, and I will also as seva give the firewood to the ashram. इस तरह से 1 महीने चला। वो लंगर में सेवा करते थे और ये लकड़ी काट के लाके सेवा में डालते, एक बेच के कुछ पूरी भाजी या रोटी भाजी लाते, तो दोनों मिलके खाते। ऐसा 1 महीना चला। एक दिन बरसात के समय भाई मंज आश्रम के लिए लकड़ी का बंडल उठा के जंगल से ला रहे थे, तो तूफान आ गया। धूल और हवा पानी एक होके बवंडर, और आंख में धूल जाने से उनको कुछ दिखा नहीं, और बंडल बहुत बड़ा था, क्योंकि पहले जमाने के लोग थे। आज के लोग 3-3 आदमी भी वो बंडल उठा नहीं पाएंगे, तो इतना पहले इतनी ताकतें थी उनमें। तो लेके पीछे पीछे ढकेलते गया, और एक पुरानी बावड़ी थी जिसमें 4 फीट पानी था, और उसी बावड़ी में जाके गिर गए। So that way a month passed, and every day he would cut 2 bundles of firewood and carry that firewood. He would carry very heavy bundles of firewood. In those days people were stronger, and a person could carry that much. In today's times we would require 3 people to carry that much firewood. So every day he would do that, and that way a month passed. So one morning when he was doing this and bringing that firewood towards the ashram, there was a storm, and there was a lot of dust and rain, and visibility was very poor, and the wind was so strong that with his bundle the wind pushed him behind, and he fell into a small shallow well which had about 4 feet of water. So he fell inside the well with the firewood. तो गिर गए। और यहाँ महाराज 9 बजे सत्संग कर रहे थे,
जब से वहां वो गिरे तो इन्होंने सत्संग बंद करके भागने लगे बाहर निकल के। तो सेवादार लोग सोचते अरे महाराज सत्संग बंद करके भाग रहे, क्या बात है। उनके पीछे और भी सेवादार भाग के आने लगे। तो महाराज कहते एक सीढ़ी और एक रस्सी लेके आना। So at that time, Guru Arjan Dev Ji was giving a satsang at 9 o'clock in the morning, and as soon as this incident happened and Bhai Manch fell inside the well, the master stopped his satsang and he started running. So all the people who had gathered there were wondering how the master suddenly left the satsang halfway and started running like this, and they started following him. So the master told them to carry one rope and one staircase, one ladder, and he told them to follow him. तो बाद में भागते 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 1-1.5 किलोमीटर दूर था जंगल, वहां तक गए अर्जुन देव, और पीछे पीछे ये लोग भाग के आ रहे थे। और जाके एक फरलांग दूर पे ही अर्जुन देव खड़े हो गए। और ये लोग को कहते हैं सेवादारों को कि जाओ आगे बावड़ी में गिरा है उसको निकालो, भाई मंच को। तो क्यों ये दूर खड़े रहे कि ये लोगों को भेजा कि इनके दिल की बातें बाहर आ जाए। So that way the master was running, and he went about 1.5 kilometers, because this where Bhai Manj had fallen in the forest, it was quite far away. So when he went there, all the followers were also the other devotees were also running with him, carrying that ladder and the rope also. So when he reached nearby, about a furlong before, he stopped there, and then he told the other sevadars that Bhai Manj has fallen in that well, so you help him to come out from there. तो लोग गए, रस्सी डाली, कहते हैं कि बंडल तू वो बंडल फेंक दे, रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा। तो कहता है कि नहीं, ये गुरु की सेवा का है, ये गीला नहीं होना है, पहले इसको निकालो फिर मैं निकलता हूँ। तो सेवादार कहते हैं अरे क्या गुरु गुरु करता है, गुरु गुरु करके तेरा सब सत्यानाश हो गया, तू अभी भी गुरु गुरु करता है। So he purposely stood at a slight distance because he wanted to also hear and see what the sevadars have to say. And when the sevadars went to help Bhai Manj out of the well, they lowered the ladder and the rope, and they told him that he should shrug that firewood off and take the ladder and climb out. But then Bhai Manj told them that he could not put that firewood in the water, and that they should first take the firewood out because that is his seva, and then he would come out. So the sevadars were annoyed, and they told him that you leave that and you just climb up and come out. But he said, no, this is my seva for my guru, so you do that first, you take the firewood out first. So the sevadars told him that what guru you are doing, you have wasted your whole life and you have ruined your life because of your guru. तो हाथ जोड़ के कहता है कि देखो भाई, तुम हमको भले भला रखो लेकिन हमारे गुरुदेव को कुछ मत कहो। So with folded hands, Bhai Manch told them that please don't say anything about my guru like this, and whatever you want to tell, you tell about me, but don't speak ill about my master like this. तो बाद में सीढ़ी छोड़े और रस्सी छोड़े, रस्सी में उसने बंडल बांधा, पहले बंडल निकाले फिर उसको बाहर निकाला। तो बाहर निकालते ही अर्जुन देव भाग भाग के आए और भाई मंज को अपने गले में लगा लिया। So then the sevadars lowered the rope, and they first took out that firewood, which those 2 bundles of firewood, and then they helped him come out. So as soon as Bhai Manj came out of that well, Guru Arjan Dev Ji ran to him and he embraced him. और उसको गले लगा के आशीर्वाद दे दिया
कि भाई मंज का बोईता जग लंगन हारा, तो जिसको नाम देगा इसी जन्म में सतलोक जाएगा। So he embraced Bhai Manj, and Guru Arjan Dev Ji gave him a boon that whoever you initiate in this life itself, he will go to Sachkhand. क्योंकि और उसी समय उसकी रूह को सतलोक पहुंचा दिया और उसको भरपूर कर दिया। तो सेवा से भाई मंज ने गुरु को प्राप्त किया। So at that very instance, he took Bhai Manj's soul also to Sachkhand, and he gave him this boon also. So it is the seva that Bhai Manj had done, which showed his devotion, and he got his salvation by doing this seva. लेकिन अर्जुन देव बहुत खुश थे। वो कहते नहीं, तू मांग, मैं बहुत खुश हूं, तुम जरूर कुछ मांग, अब मैं देने के लिए तैयार हूं, चाहे तो काल के हटा के त्रिलोकी का राज तुझे दे देता हूं। तो बोलता है, महाराज आप जैसे सत्पुरुष मिलके ये त्रिलोकी का राज लेके हम क्या करेंगे, हमें तो आप चाहिए। So Guru Arjan Dev Ji was very pleased with Bhai Manj, and he told him that I am extremely pleased with you. So you ask for whatever you want. If you want, I will remove Kal and his control over these three worlds, and I will make you sit in place of Kal. So Bhai Manj said that no, I don't want that. When I have the Satpurush, I don't want to replace Kal. So, but Guru Arjan Dev Ji said no, but you must ask something. I am extremely pleased with your seva. क्योंकि अर्जुन देव बहुत खुश थे और बार बार कहने से वो हाथ जोड़ कर, अच्छा महाराज आप बार बार कहते हो तो मैं एक मांगता हूं कि आगे घोर कलयुग आने वाला है और संत जो है आगे सिख की परीक्षा ना ले, यही मुझे दे दो। So Guru Arjan Dev Ji told him that you must ask something. So when he insisted so much, Bhai Manj said that okay, if you are insisting that I ask for something, though I don't want anything, but if you are insisting so much, then you give me a boon that now Ghor Kalyug is going to come, and the masters should not test their disciples because it becomes very difficult. So you stop testing disciples. कभी जो एक संत कानून पास करते हैं सब संत उसको अनुसरण करते मानते हैं, और तभी से परीक्षा लेना बंद हो गया। ये भाई मंज की ही जो कृपा थी। So whatever, so he was granted that boon by Guru Arjan Dev Ji, and it is such that whatever one saint decides or agrees, all the other saints follow that. So it is because of Bhai Manj that this practice of testing disciples is now over, and that is now no longer done by the masters to test their disciples. ये कहानी इसलिए बतानी पड़ी कि देखो एक गुरुमुखों के कितनी परीक्षा देने के बाद में भी अपने गुरु के प्रति सरसों के बराबर भी अभाव नहीं आया। सैकड़ों एकड़ जमीन चले गए, घर के लोग साथ छोड़ गए, जानवर घोड़ा घोड़ी भी वो सब मर गए, सारा नुकसान हुआ, लेकिन उनका मन नहीं डोला। तो कहते ये भक्ति है, ये गुरु भक्ति, ये गुरुमुखों का ऐसी भावना दृढ़ होता है, डावाडोल नहीं। हमारे जैसे लोगों को कोई एक साथी साथ छोड़ के चला जाए तो हम सहन नहीं कर पाते, दोष गुरु को देने लगते हैं कि हम पुराने सत्संगी है, गुरु ने उसकी रक्षा नहीं किया। अरे भाई जो जाने वाला है वो तो जाना ही है, जब उसका टाइम हो गया तो जाना ही पड़ता है, वो चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो। अगर उसकी जीवन शैली कुछ बाकी रहती है तो गुरु जरूर बचाता है, अगर नहीं बाकी है छोड़ देता है। एक्सीडेंट से भी सत्संगी मरते हैं और बहुत ऐसे भी मरते, क्यों? उनका टाइम वैसा ही जाना है। अगर उनका कुछ रहता जीवन ये है तो जरूर बचा लेते हैं।
क्योंकि वो ताकत आपके अंदर ही बैठी है। जब से संत नाम देते हैं, शब्द से जोड़ देते हैं, वो शब्द आपके साथ ही रहता है, वहां कहीं बुलाने की जरूरत नहीं, वो तुरंत रक्षा कर लेता है। So the reason of telling you this story of Bhai Manj is to emphasize on how this devotion of Guru Mukhs is, how true they are and how resolved they are in their devotion and in their faith in their master. So despite losing his wealth, all of his wealth, and losing all of his family members also, they all left him, and so many difficulties were faced by him, but he did not get any he did not have any ill feelings towards his master, not even equal to a mustard seed. So despite all of this, he remained very firm in his resolve and in his faith in the master. So that is how the devotion has to be carried out. That is how we should be devoted to the master. That is how we should be resolved in our faith in the master and have love towards him. But what happens is with us, with you and me, uh, we are easily swayed by outside things. Now, if some family member leaves us or passes away, then we immediately start blaming the master for it. We immediately go to the master and complain that why is it that he did not try to save the family member or the near one or the dear one. And the masters, they are always there to shower their grace upon us, but if the lifespan of the dear one is that much, then they do not extend that lifespan. But if there is a longer lifespan, then they will definitely extend all the help. So there are so many losses that happen like this. People die due to accidents, people die due to illnesses, and whatever is destined, that is going to happen. And they will have to go through those karmas. But wherever it is feasible, the master definitely extends help. Once a member is initiated, the master is not far away. He is sitting within, next to that soul. He is sitting within. So it doesn't take him time to extend his grace or extend his help. So we should never have any lack of trust in our master when we are faced with any kind of difficulties. We should remain completely resolved, like Bhai Manj, in our faith towards our master. तो अभी हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, धन दौलत का लाभ मिलेगा या तो बीमारी दूर हो जाएगी, इसके लिए हम गुरु के पास नहीं जाए। हम क्यों गए? फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, अपने आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाना, मुक्ति के लिए गए, और गुरु ने हमारी जवाबदारी लिया। तो अब हम गुरु के हुक्म का पालन नहीं करते, फिर भी हम मन के दायरे में ही काम करते हैं, मन का ही कहना मानते हैं, गुरु का कहना मानने को तैयार नहीं। तो बताओ गुरु कैसे कृपा करे? We do not go to the masters to seek profits in our businesses or to seek better health or better relationships. We go to the masters to seek riddance from this ocean of life and death, to get rid of this world here and be free from this burden of the mind. So that is why we go to the masters. And when we go and surrender to the masters, they take that responsibility of freeing us, freeing our soul from this ocean of life and death. Now, when they have taken that responsibility, it is incumbent on us to do that devotion of, as explained by them. But instead, we keep on being swayed by our mind and we keep on expecting all the outward worldly things from them instead of focusing on their teachings and going within and getting our salvation. इसीलिए चाहिए हम गुरु का हुक्म माने, 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बनावें, जिससे हमारा दिल पुख्ता होगा और बाहरी ये मोह
और बाहरी दुनियादारी के जो है कि उसका असर हमारे मन पे नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक सुमरन और ध्यान ही है जो हमें इन सब बुराइयों से दूर करेगा। तो चाहिए कि हम गुरु का हुक्म माने और जैसे दुनियावी कारोबार रोज रोज करते हैं, हम भजन सिमरन भी रोज रोज करें। So the masters tell us to do bhajan simran. They tell us to do that meditation every day, and by doing that, we gain that strength within us to face all the difficulties and any bereavement or any other thing, to face any upheavals in our life. We are able to face all that by doing our meditation. So the only thing that the masters are telling us to do is to do our to do our meditation regularly, and we should do that just like we do all our worldly things, and we go about doing our routines. That way we have to also spend time to do meditation every day. वही भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम। भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम। शीश उतारे हाथ से, सोले सी सतनाम, सोले सी सतनाम। तो वही कबीर साहब लास्ट में क्या कहते हैं, शीश उतारे हाथ से सोले सी सतनाम। शीश कहते हैं, ये सिर्फ संत नहीं मानते, अहंकार का शीश, मैं मेरा मेरा, कहते यही है जो हमें बार बार दुनिया में लेके आता है, जन्म मरण में भरमाता है, 84 में भटकाता है। इसको काट के, अहंकार रूपी सिर को काट के गुरु के चरणों में रख देना, और आप सबसे छोटा से छोटा बन के दुनिया में रहना और गुरु भक्ति करना, तो जरूर सफलता प्राप्त होती है। और हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार को लेके हम भजन करेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। So Kabir Sahib says that you should offer your head to the master. You should offer by saying that you should offer your head to the master. He doesn't mean the physical head, and what he means is that you should offer your ego. It is that ego of this mind which is bringing us again and again in this ocean of life and death, and making us do all these deeds, and coming again and again into this world. So what he says is that you offer your ego to the master, and when you do so, you offer that ego and stay in a very humble way in your life. Be very humble and do your devotion. If you are able to offer that ego to the master and do your devotion with all humility, you will definitely be successful on this path. If you carry a lot of ego towards your master, when you go and in your devotion, if you carry a lot of ego, then you will not be able to get success. So you have to behead that ego and go about in a very humble manner in your devotion. वही भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम। भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम। शीश उतारे हाथ से, सोले सी सतनाम,